हेलो एवरीवन। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के लिए जो स्पेशल बैच हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए है यूट्यूब पर, उसका ये नेक्स्ट डिक्टेशन है। आप लोग इस डिक्टेशन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से लिखिए। उसके डिक्टेशन ख़त्म होने के बाद आप लोगों के लिए एक दो और भी गुड न्यूज़ है जो कि बोल रहा हूँ। अभी इसको अच्छे से लिखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। A written statement was filed in which several pleas were raised, including that the defendant was not in a position to get the tenants evicted from the premises. It was also pleaded that the suit for permanent prohibitory injunction was not maintainable in view of the bar under Section 41 of the Specific Relief Act, as the suit ought to have been instituted for relief of specific performance. It appears that to avoid the objection taken in the written statement, the plaintiff applied for amendment of the plaint so as to add a relief for mandatory injunction to direct the defendant to perform the contractual obligation set forth in the agreement for sale. This application was not pressed by the plaintiff. Thereafter, a more comprehensive application for amendment of the plaint was moved in which not only the relief for mandatory injunction but the relief for specific performance was also sought. It is this subsequent amendment application dated 28 April 2014 which has been allowed by the impugned order. The contention of Shri P.K. Singh, learned counsel for the revisionist, is that since the suit was for permanent prohibitory injunction and the agreement for sale was dated 20th February 2008, the relief for specific performance of the agreement had become barred by time, but the amendment application was filed, therefore, by allowing the amendment application, the court below has indirectly removed a fatal defect in the suit, thereby causing serious prejudice to the defendant. It has been submitted that the nature of the suit has changed because of conversion for specific performance of an agreement which cannot be allowed. Per contra, Shri S.C. Tripathi, learned counsel for the plaintiff respondent, has submitted that the basis of the suit was the agreement for sale between the parties, and the suit was instituted for enforcement of contractual obligations of the parties arising therefrom. He submitted that whether the relief for specific performance is barred by time or not has been left open by the court below while allowing the amendment, and since the question of limitation could be better adjudicated after leading of evidence, keeping in mind the terms and conditions of the agreement, it would not be appropriate for this court to adjudicate the issue of limitation at this stage, particularly when the court below has left it open to be agitated by the defendant. He
further submitted that it is well settled position. अभी ये डिक्टेशन आप लोगों ने लिख लिया है। अभी इस डिक्टेशन के जो आउटलाइन्स है उसको आप लोग अच्छे से एक बार रिपीट करके देख लीजिए, रिव्यू कीजिए, और जहाँ जहाँ आप लोगों को लगेगा कि ये डिक्टेशन का जो ये आउटलाइन है, ये आउटलाइन आपको ठीक ठाक से आप लोग नहीं बना पाए तो उसको गोल कीजिए और रख दीजिए। देन आप लोग जो जो ठीक ठाक लिखे उसको आप लोग टाइप करने के लिए शुरू कर दीजिए। जब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा और जो जो आप लोगों ने गोल गोल किया है तो उसको मतलब छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जब डिक्टेशन लिखने शुरू कर देंगे तब अगर उस एक डिक्टेशन खराब आया है तो उस डिक्टेशन के लिए आप लोग अगर सोचते रह जाएंगे तो टाइम भी अपने आप ही चला जाएगा। तो उस डिक्टेशन को आप रहने दीजिए और अच्छे से ट्रांसक्राइब कीजिए। पूरा ट्रांसक्राइब करने के बाद भी आपका जो जो गलत हुआ उसका, अभी इंग्लिश में जो जो गलत हुआ, क्या क्या पंक्चुएशन मिस्टेक आया, क्या क्या आपका स्पेलिंग मिस्टेक आया, क्या क्या आपका एक्स्ट्रा वर्ड आपने लिख दिए, सब कुछ अच्छे से एनालिसिस कीजिए। ये सब कुछ आप लोग हमारे स्टेनो सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं, वहाँ पर सेम सब कुछ मिलते हैं। तो आप लोग वहाँ पर भी ऐसे करके कर सकते हैं, नहीं तो आपके हिसाब से आप कर लीजिए, लेकिन ये सेम ऐसे ही प्रोसेस आप लोग फॉलो कीजिए तो आपका ज़रूर इम्प्रूव होगा। और देन जो जो मिस्टेक हुआ, जो जो आप लोगों ने देखा कि ये गलत हुआ, उसको फिर से रिपीट कीजिए, उसको अच्छे से फिर दोबारा लिखिए, फिर नेक्स्ट आप डिक्टेशन सुनिए और अच्छे से लिखिए। ऐसा करके प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आपका इम्प्रूव होगा। और इसके साथ आप लोग डेली हमारे साथ जो लाइव डिक्टेशन है वहाँ से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे हमारा ज्वाइन होना पड़ेगा। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक है, सॉफ्टवेयर का भी लिंक है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे आप लोग विजिट कीजिए और सॉफ्टवेयर और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आप लोगों को डेली 6 बजे, आप लोगों को सुबह 6 बजे आप लोग क्लास कर सकते हैं। 6 AM to 7 AM लगभग हमारा क्लास होता है, जहाँ पर लीगल डिक्टेशन, मिक्स डिक्टेशन, जनरल डिक्टेशन वहाँ पर रहते हैं और आउटलाइंस भी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस की या क्लास की कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ते है। तो आप लोग जुड़िए हमारे साथ और भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, यही हमारा मेन मोटिव है। तो और चैनल पर यूट्यूब पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे तो हम लोगों को मोटिव भी मिल जाए कि हाँ, और भी अच्छे से वीडियो बनाने के लिए भी हम लोगों को मोटिवेशन मिलते हैं। तो हो सकता है तो आप लोग अगर अच्छे लगे तो ये आप लोग लाइक कीजिएगा, बाकी कोई फोर्स नहीं है, आपका हिसाब आपका मर्जी से आप कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, क्योंकि आपको अच्छे से एक नौकरी आप लोगों को लेना ही है, यही हम लोगों का सबका मोटिव है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।